संविधान का मतलब समझते हैं हम सब। आजकल विकिपीडिया और गूगल बहुत इजीली यूज होता है, लेकिन केयरफुली कैसे इसको पिक्चर में डाला गया है ये बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन विदाउट फर्दर अडू आई एम एक्चुअली गोइंग टू प्ले द ट्रेलर फॉर यू, और मच हाईली अवेटेड ट्रेलर आल्सो, और एक नहीं 2 बार प्ले करूंगा मैं आपके लिए। उसके बाद we'll come back and we'll have a long chat about that. But when the trailer finishes, I know we've got friends and family in the media and everyone's clicking. I do want a nice reaction after that, okay? An honest reaction. So we'll play the trailer twice. और हम सबके चाहिए अभिषेक बनर्जी सर आ जाइए स्टेज पर। Can I get the mics also please? Sir, yes. I'd now like to call the people on stage. And from MA Entertainment, Monisha Advani and Madhu Bhojwani. Can we have a big round of applause for them, ladies and gentlemen? And can you pass on the mics to them as they walk in? Yes. नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा नीचे अरे करना एडजस्ट करना बेटा, उसको भी देते ऐसा नहीं करना है, गलत बात है। Can we get a seat? Just give them all the mics. This is another very proud moment. I've known her for such a long time. So proud of you, Meenakshi. Big round of applause for her as well. So sir, we'll start with you. This is action-packed, power-packed. Goodbye then. Absolutely, but this combination between you and John sir is always fantastic. And like I say, कई बार believable नहीं लगता है कुछ चीजें, जब इस पर लोगों का सेंसर के साथ बड़ा इशू है ही, शर्वरी का भी है, जॉन का भी है, तो but it is always difficult. So मेरा ये भी सवाल है, जब आप इस पिक्चर बना रहे होते हैं, एक तो ग्रीन लाइट होता है, उसके बाद बीच में are you saying are we going little too much? Of course, then you have to let it be completely Nikhil. But then do you start to second guess, ये बहुत ज्यादा नहीं बन रहे, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ये सब हुआ आपके साथ में when you were making it? I think we ask that question of ourselves every time. कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, और मैं सिर्फ बजट की नहीं बात कर रही, मैं हर जो मुद्दे या जो कहानियाँ हम बताते हैं, I think that one, the women's voice is very strong in the stories that we tell at MA. In fact, I think Z के साथ हमने, ये हमारी second release है Mrs. Chatterjee के बाद, and let's not forget that the population is 50% women. Not only in the I think that all these things, we go through a lot of deliberation, but Nikhil really knows how to pick them. We keep upping the ante. It works. And before I come to Abhishek, there's a lady right at the end. Where everyone who knows, if you want to come to John, you have to go through Meenakshi. That's the way it works. That's the filter, and it's fantastic. Congratulations, Meenakshi. Anyone can go to John directly. I think everyone knows that. He's the most approachable man on this planet. And you are so in the right spot. Congratulations on this new, as a co-producer. I've known you for so long. You've always been so level-headed. You've always worked in the right spaces. मैं नाम बोल लूँगा ऐसा एक्टर का, लेकिन फाइनली मैं इनको संडे को मिला था और इन्होंने मुझे ये वेदा की स्क्रिप्ट जो है मैंने वहाँ पढ़ी, and I think it is one of the best scripts I've ever read. And I really मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, because of casting के काम की वजह से भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ. I think it's a very special script, और ये इंडिया के लिए बहुत important है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत important कहानी है. And and it's a privilege to work with this team and this director. I still remember this one small thing. It was a talkie scene, and Nikhil sir just came and told me that इसको बस तू action scene की तरह treat कर. ये छोटा सा जो एक tip था, that changed a lot in the performance. So I'm grateful. Thank you, sir. Thank you for being there throughout this journey. And now let's hope the audience. Absolutely, I'm going to give out to the audience before that, but just some words with me just before I. I was looking for somebody to play Veda when Sharvari came into the office, and she heard it, and I looked at it. I said, "This is Veda." I mean, I think it's incredible. John and I worked very hard on the script. We worked hard on the action, because actually most people still say, "यार कलोना क्यों नहीं बनाते हो? कलोना क्यों नहीं बनाते हो?" So for me to be able to do what I did with DD and take it one step further in terms of the action, it was really interesting. But most importantly, I think we worked very hard on the script. And I'm repeating again, and this is what I try and explain to जितने सारे हमारे studios है, marketing people है, and I try and explain in the nicest possible way. क्योंकि all credit to Z, they're a fantastic team. लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि if your film's not good, no amount of marketing will help the film.
तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ सबके सामने, वेदा इज अ डैम गुड फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म और चलेगी, कितना चलेगी मुझे पता नहीं। वेदा's got Nikhil Advani as director, it's got Abhishek Banerjee, it's got Sharvari Wagh, it's got fantastic actors in this film जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, outstanding. Please, I mean, if you can just please stand up and everybody just. The film is not complete without all of them. Cinematography, action, Malay, Amin Bhai, and a lot of other things. तो film का जो USP is everything. It's not just one thing. And it's a, और मैं on record कहना चाहता हूँ, it's I am also half Parsi. Please understand कि जो बुरा है मैं बुरा बोलता ही हूँ. I don't care. Veda is a good film. It's a very good film. जॉन सर मेरा क्वेश्चन आपसे है. Prisoner of his own image. कि जैसे सलिल ने कहा बाइसेप्स है, ये है वो है, लेकिन जो इंटेंसिटी अभिषेक has brought to the character is unbelievable. अभिषेक is outstanding. तो मैं अपने एक्शन की बात करूँगा, he's still in the trailer, he's outstanding. And John is very humble also and he likes to always, but which is the truth also. But ये बात सच है, ये जो बोल रहे हैं कि अभिषेक ने बहुत कमाल का काम किया है. Hi, this is Prachi, and my question is to Madhu ma'am. You've always made these stories with real. मुझे भी याद है पहली बार जब मैं इनको सेट पे मिला था और मैंने इनके डोले देखे थे, बोला कैसे हाउ डू आई इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम. बट या आई थिंक बट बात ये है कि हम हमेशा एक्शन और ये जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक्शन फिल्म में हर कैरेक्टर का एक्शन अलग होता है और वही कमाल की बात होती है कि आई थिंक इवन इफ द कैरेक्टर इज हिटिंग इन अ सर्टेन वे, ही इज हिटिंग विद द कैरेक्टर. तो हम इसको एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जैसे कहते हैं देसी रॉ एक्शन फिल्म है और उसमें ड्रामा उतना ही ज़्यादा है और उस ड्रामे की वजह से जो है मुझे लगता है कि एक्शन का वेट बढ़ता है. सो वो जो बिल्डअप कहते हैं ना, जो आई थिंक निखिल सर बार बार बोलते थे कि बिल्डअप है, वो जो टेंशन जब बढ़ता है तब वो एक्शन में रिलीज होता है. और वायलेंस का तभी फायदा है जब मतलब उसका कोई रेपुटेशन हो. तो इस फिल्म में आप वायलेंस का रेपुटेशन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि चोट लगी अगले सीन में ठीक हो गया. You know, so that's something which I think is unique to this film. आपकी जो फिल्म है स्त्री 2 और वेदा एक ही दिन रिलीज हो रही है, तो जब एक एक्टर की दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? मैम मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. मैं थिंक 15 के बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है. अभिषेक बैनर्जी का जो क्यूमुलेटिव कलेक्शन है, no one will be able to touch. You can't compete with him. I will be here on your left. See all three films because see we Veda need first. Well, see an Abhishek Banerjee film first. How's that? but the fact is, please support all three films. It's a lovely time in the year. Rains reduce a little. It's our 77th Independence Day. It's an important time for us to all come together and enjoy this wonderful experience called cinema. I mean, the fun that is to watch it on a screen, the smell of the popcorn. I mean, we've all talked about it and we romanticize it. But I mean, to really experience it again and again, and to have three great films to do that. Please watch all the films. That's what I would say. I'm speaking like a producer, but I'm also talking like a moviegoer. Thank you. Thank you so much. I think we'll wrap this up right now.